Shit. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। सेकंड क्लास तो किसी और सर ने ली थी, साइंस की। बेटा वो आपका अरेंजमेंट होगा ना, आज तो थर्ड पीरियड है ना मेरा। मैम वो लाइब्रेरी का ओके। पीरियड था। हाँ तो दैट वाज योर अरेंजमेंट। टुडे लाइब्रेरी टीचर इज एब्सेंट। मैम लाइक टीचर्स हैव केम टू। हाँ मैम लाइक टीचर स्कूल में आए हैं। हाँ, ओके। वी आर वॉरियर्स। मैम ऐसे तो हम भी आ सकते थे मास्क लगा के। सीरियसली इट्स वेरी पॉल्यूटेड एयर। ओके। हम्म। मैम तो फिर आज फर्स्ट से लेकर 5 तक पीरियड होंगे बस। हाँ बस टिल 1 o'clock योर क्लास विल बी कंडक्टेड। ओके मैम। ओके मैम। ये सब सिंघानिया आपने तो बड़ा अच्छा अवतार लगाया। यस मैम। अयान को देख लो और है अवतार लगा लगा के बैठे हैं, ये अलग ही अवतार बन रहे हैं।
Okay बेटा, tell me how much we have done, because बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी. We were busy in annual function. Till which topic we have done? Let me know. Take out your notebook. Ma'am, we had done the Bruhh model of an atom. Okay. Bohas, we have to start. Yes, ma'am. Okay. Beta, everyone, you will turn on your video and you can camera in front of your notebook. और प्लीज ज्वाइन करने वो मत करना, क्योंकि एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि पार्टिसिपेंट्स को ऐड ही करते रह जाती हूँ फिर. ठीक है, तो ट्राई टू बी हियर ओनली. मैम मेरा कैमरा खराब है. ठीक है. मैम, हाँ क्या जी. हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे? नहीं बेटा. हार्दिक शर्मा बार जा रहे हैं. Let's start. Okay, everyone. So next model of atom. ठीक है. और ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में जो एक्चुअल में बताया गया, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ठीक है. बोहर था नील बोहर. ठीक है. और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम पे, कि डिफरेंट टाइप्स के हम लेवल होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस इवॉल्व करते हैं, और जैसे हमने शेल्स किया था प्रीवियस चैप्टर में, KLMN. ठीक है. 4 शेल्स है हमारी इन दिस क्लास. तो 4 शेल्स, हर एक शेल का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है. ठीक है. और हर एक ऑर्बिट जो होता है उसका एक डिफरेंट रेडियस भी होता है. ठीक है. तो नील बोहर ने स्पेशली क्या एक्सप्लेनेशन दी है कि एक जो एटम होता है वो, ठीक, तो he basically explained the stability of an atom, right? So everyone write down the heading Bohr's model of atom. BOHR, Bohr's model of atom. जिसके आसपास शोर नहीं है काइंडली अनम्यूट. जिसके आसपास शोर है वो अपनी, so that should not be disturbed. मैम आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो ना. Yes, ma'am. बेटा आई डोंट हैव नोट्स ना, मैंने नोट्स बना नहीं रखे. आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन. ठीक है. आई विल टेल यू, डोंट वरी, बट समटाइम्स यू हैव टू राइट डाउन. तो लिखिए उसको एक बार. मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ रिटर्न में. आफ्टर लेट यू नो हाउ इट will be done. Have you all, please don't write anything. Hardik Sharma, what is the issue with you? Okay beta, write down first point. The electrons could revolve. The electrons
could revolve around the nucleus in only Repeat. electrons could revolve around the nucleus. Samarth, are you writing? यस मैम। आपका अवतार दिखा नहीं रहा है आपको। मैम सर इस तरफ करके लिख रहा था। अच्छा, revolve around the nucleus in only certain orbits. Krishna Pachori, show me your notebook. Krishna, notebook. Krishna ji, show me your notebook. You are listening, I know that. Those who are not listening, I will remove them. कृष्णा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है बेटा? Am I audible, class? यस मैम। Very clearly, ma'am. Audible. Krishna, if you are not showing me your notebook, no need to sit here, beta. आपको सुनाई दे रहा है कृष्णा? जब मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही तो why you are sitting here then? Don't want to do any work. लिख लिया certain orbits or certain energy levels or certain energy levels, comma, each orbit having a different radius. Each orbit having a different radius. Second point, when an electron is revolving, when electron is revolving in a particular orbit, or particular energy level or particular energy level around the nucleus, comma, the electron does not energy, the electron does not lose energy, comma, even though it accelerated, as accelerated motion
around the nucleus. Around nucleus. Able to see this? Yes. मैम मैम बहुत देर है। मैम ब्लर है। अब भी? अब ठीक। अब तो नो मैम। यस नो मैम। देखो, मैम। नो मैम। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी के शेल। के शेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2 है। यानी हर एक जो शेल है उसका अपना अपना एनर्जी लेवल है, एंड दे डू नॉट लॉस देयर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी शेल आती है? एल शेल। एल के बाद कौन सी शेल है? और एम के बाद है कौन सी शेल? एन। बेटा मैं ये आपको ना व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर देती हूँ। एक बार ये ड्रॉ करिए अपने डायग्राम, ठीक है। इट जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। मैम पेंसिल से। एक मिनट। हैव यू ऑल रिसीव्ड? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होती है हर एक एनर्जी लेवल पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल है हमारा के शेल, इट कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लेवल है एल शेल, इट कैन होल्ड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड एनर्जी लेवल है एम शेल, इट कैन होल्ड मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। और फोर्थ एनर्जी लेवल है हमारा एन, इट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी सबका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ होता है, ओके। मैम ऐसा क्या? ऐसा क्यों? वाई? देखो, इट वाज गिवन बाय बोहर मॉडल, ठीक है। तो हम उसकी स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं अभी कि, ठीक है। और इसी की वजह से ये चीजें जो है, ये एटम्स जो है वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। डू योर वर्क प्रॉपरली बेटा। अब तक बहुत बच्चों की वीडियो ऑन थी और अब बहुत बच्चों की ऑफ हो चुकी है वीडियो। ओके, यू ऑल आर डू। इज इट डन?
Done, beta? Yes, ma'am. Okay. Next, write down the mass number. Mass MS. उससे पहले एटॉमिक नंबर करेंगे हम. तो write down the atomic number. Write down the next heading, atomic. देखो, एक क्या क्या element होता है? Tell me. एक एटम है पास, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? Electron, proton, Proton, neutron, and electron. neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. Neutron. अब नंबर का क्या मतलब है कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है एज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसी को हम क्या बोलते? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो बेसिक नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एटम. ठीक है. और नंबर ऑफ ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम नोट, चीज की एक डिनोशन होती है कि हम किसको किस लेटर से डिनोट कर. एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट किया. एम आई क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, Yes, ma'am. Have you all written the heading? Number? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so write down the number of protons, the number of in one atom in one atom of an element of an element is known as. चंदन कुमार कौन है बेटा? Ma'am, Okay. Of element is known as atomic number of that element. Atomic number of that element. Full stop. Next line में लिखिए atomic number of an element. Atomic number of an element is equal to the number of protons in one atom of element. Number of protons in. विष्णुप्रिया बेटा ये चैट बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो. सोच रही है शिट मैम को कैसे पता लग गया है ना. प्लीज डोंट डू एनी अदर एक्टिविटी बिटवीन द क्लास. बी ma'am, सीरियस. atom of क्या?
One atom of element. Return. Yes, ma'am. Full stop. Next line. The atomic number of an element. The atomic number of an element is denoted by the letter capital Z. कैपिटल Z लिखना उसको, कैपिटल मत लिखना, कैपिटल Z का लेटर बनाना, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम एटॉमिक नंबर को? Z. Capital Z. Capital Z. Capital Z. Now tell me what is the what will be the atomic number of sodium? 11. 11. Why 11? ठीक है, मैम की टेबल में Ma'am, लिखा है। electrons. हाँ, because it has 11 number of. So write down for example, one sodium element atom of sodium element 11 protons in it comma, so atomic number is, so the atomic number of sodium is Z is equals to 11. Z is equals to 11. के बाद रिपीट कर दो। Z, कैपिटल Z बेटा, जिससे हमने डिनोट किया है ना, हम इसका डिनोशन लिख के दिखा रहे हैं। कैपिटल Z इक्वल्स टू 11, राइट? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Write down the next heading. Mass number. MASS. Mass number. Mass number. Return. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब मास नंबर को बेटा हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि टोटल जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम टोटल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर। कब बनता है? व्हेन वी ऐड टोटल नंबर प्रोटॉन्स विथ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो क्या आता है हमारे पास? Mass. Mass number. Mass number. And mass number is also known as Atomic mass. Atomicity. mass. Atomic mass. Yes. Atomicity. ठीक है? So write down the total number of protons. The total number of protons. Okay, the total number of protons and neutrons present in one atom, of an element of
an element is known as its mass number, Ma'am, atomicity and mass number are the same thing? return beta. Yes, ma'am. Till mass number. Okay, ma'am. full stop. Next line. Mass number is equals to, see how I write down this. I'm letting you know. Wait. You see this? Mass number is equal to number of protons plus number of Ma'am, it's neutrons. blur. I think it's not blur. Yes, ma'am, it is blur. ये वाली लाइन लिखिए बेटा, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. रिटर्न. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट लाइन में द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द मास नंबर of an element is denoted by the letter A, by the letter capital A. Return. Yes, ma'am. अच्छा, ma'am. अब आप सबको ये तो पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास उतने होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. बट हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? Ma'am, 1 minus proton. Minus. So what about carbon? So 5 neutron. There should be 5 neutron. No, 6 neutrons. मैथ केमिस्ट्री हैज एक्सेप्शन हो गया. हाँ, मैम I'm giving you this task. So no, Exception होंगे. listen. I'm giving you one example of this atomic number, mass number, and your task for today is that you will find that how to find out the number of neutrons, right? So tomorrow I will ask question about this. Will all like find the answer that how can we calculate the number of neutrons? The mass number minus number of protons. Mass number minus protons. ये मास नंबर तो तभी आएगा ना आपके पास में जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स को ऐड करोगे. तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ से आया? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर टास्क. ठीक है. जैसे न्यूट्रॉन की मैथ जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी हमारे चैडविक ने की थी, तो वैसे ही उससे हम निकाल सकते हैं कि कैसे नंबर ऑफ इस एलिमेंट में एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने, और फिर जो हमें दूसरा एक्सपेरिमेंट था उससे हमें प्रोटॉन्स का पता चल गया. तो ऐसे भी तो कर सकते हैं एटॉमिक मास नंबर. मतलब हाउ विल यू फाइंड आउट दिस? मैथ जब चैडविक ने हमारी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी
तो वो एक एलिमेंट को लेके फिर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेगा। फिर हम वो जो हमारा अल्फा रेस वाला जो अल्फा पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल ले, ऐसे भी तो कर सकते हैं। मैथमेटिकली बताइए मुझे, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? चलो एक बार लेट मी कंप्लीट दिस। मैं इसका एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ आपको, उसके बाद आई हैव गिवन यू टास्क 2, ठीक है? तो कल हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, दैट हाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। सो आपने अभी लास्ट लाइन क्या लिखी है? मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? नो Yes, मैम, ma'am. जब The मास नंबर mass होता है number एलिमेंट is denoted The by हाँ, mass letter लास्ट number लाइन denoted by कैपिटल ए। letter A. ओके ओके ओके। यस नेक्स्ट मैम। लाइन में लिखिए फॉर यस एग्जाम्पल, मैम। for example, 1 atom of sodium, 1 atom of sodium element contains 1 atom of sodium element contains 11 protons, 11 protons and 12 neutrons and 12 neutrons, comma. So the mass number of sodium, so the mass number of sodium is 11, 12 is equals to 23. 11 plus 12 is equals to 23. Right? Yes, ma'am. Example stop. Similarly, a normal carbon atom, a normal carbon atom has protons, has 6 protons and 6 neutrons. Vishnu Priya, beta, if you don't want to learn anything, then you can leave the class. But don't do these actions in the class. Okay? Six protons and 6 neutrons, comma. So the mass number of carbon, so the mass number of carbon is 6 plus 6 is equals to 12. 6 plus 6 is equals to 12. Is this clear? yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is the task for today? फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं how many students will find this task, and tomorrow we will discuss on this. Then we will have some numericals based on this topic or chapter, right? Valencies already told you. अब वो कुछ टॉपिक हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं इसी के बेसिस पे,
कुछ वी हैव टू डू। ठीक है, तो आपका कल के लिए टास्क मैंने दे दिया है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? Bohr's model of atom, then atomic number and mass number. ठीक है, and your task is how to find out the number of neutrons of an element, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And atomic number and atomic mass you must have to learn, because I have given you one table in the previous chapter. आप सबने लिखी हुई है वो टेबल? Yes, You ma'am. already Yes, made. ma'am. Yes, ma'am. So you all will revise it. You all will learn from that. ठीक है, और कल सब ये प्रिपेयर करके आएंगे that how to find out the number of neutrons of an element. All right. Yes, ma'am.